For more videos like this, subscribe to the channel and press the bell icon. Okay, good morning everybody. It's not such good morning for me because last night something happened with my bike. It's been around 2 years. This has happened to me for the first time. As you can see, everything is normal. Like when I flip the gear switch to on position, everything goes fine. Yeah, everything is normal and it is in neutral and the battery sign is on, but something strange happens when I try to start the motorcycle. Watch this. Yes, so this is what happens, and it seems to be originating from here. यहाँ से साउंड आ रहा है, कोई रिले है इसमें जो इस टाइप का साउंड कर रहा है. Yeah, I'm back to Hindi because a lot of guys say make videos in Hindi, so this one is in Hindi, or you can say in English I mean. So yeah, if you listen to it closely, yeah, so it just makes this sound and it was stalled. Thankfully I was not far away. Yeah, so I'm keeping it high on idle because I have to go to the mechanic, and once I manage to start it, and this is for everyone who has an Avenger, अगर ख़राब हो जाती है तो what do you have to do अगर start नहीं हो रही है. So there's a little nifty feature that you can try. Okay, first of all सुना ही होगा कि सेकंड गियर पे डाल के स्लोप से नीचे आना है, क्लच छोड़ देना है वगैरह वगैरह, but I don't think that works too well. So what are you going to do? You're going to put it in the highest gear possible. Like for example, okay, it won't go that easy. You have to move it a little bit. So now I think it's in the अभी हाईएस्ट पे हो गया है, और मैं क्लच लेके भी स्टार्ट करूँगा तो या. And the issue is strange because if you look closely, indicator is working fine, that indicator is working fine, plus I think the headlight is working fucking fine. So this issue is really strange. So yeah, what do you have to do? You just have to off, on, and put it in the highest gear possible. Oh shit, I'm moving my clothes. Anyways, so put it in the highest gear possible and make sure that the idle is set a little bit high. थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी, otherwise you know गाड़ी के बंद होने का इशू रहेगा. And choke लेने की I don't think so you need choke. So now what do you have to do? सबसे ज़्यादा वाले गियर में डाल देना, like 5th गियर में मेरी बाइक है. Then you have to मैन्यूवर दिस. और हाँ, ये थोड़ा अनसेफ है. अगर आपके पास स्लोप है या बाइक लेके भाग सकते हो और फिर छोड़ सकते हो क्लच और स्टार्ट करने का, अगर आप हैबिचुअल हो देन फाइन, क्योंकि मेरे पास अभी भी ऐसा कोई स्लोप है नहीं है सच नियर अबाउट. अरे यहीं पे ख़राब हुई है, तो मैं ये चीज़ ट्राई करने वाला हूँ. ओह शिट, नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. ओके, गिव इट अ फ्यू टाइम्स. Oh shit, no. Okay, again, no luck here, but let's try once more. Okay, how many times? Okay, I think it's not on the highest. 1, 2, 3. I'm not sure, but it's just okay. It kind of started. I have to be like push it a lot. Be much.
Oh, it almost started. That means you need more oil plus a high rev range. You have to find this mix. And then just simply go. It's not going to work this way. Yes. Now it's completely stuck. Now do this. Yes, now it's stuck. हेलो गाइस, तो आज लग थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है आई थिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्किन निकल चुकी है थोड़ी यहाँ से, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने एक बार सक्सेसफुली स्टार्ट कर लिया था व्हील घुमा के, बट आई ट्राइड लाइक 100 टाइम्स और वो स्टार्ट नहीं हुई। तो और उसी दौरान आई थिंक ये रगड़ के अलॉय व्हील से हाथ में दिक्कत आ गई एंड समहाउ आई मैनेज टू स्टार्ट इट। वही भाग के सेकंड गियर पे डाल के भाग के फिर सडनली क्लच छोड़ के एंड आई ट्राइड इट लाइक 3 टाइम्स, नहीं हुआ। 4th टाइम हो गया, मैंने फाइनली डिसाइडेड कि मैं इसको लेके ही चलता हूँ। तो 4th टाइम स्टार्ट हुई है और अभी मेरा टफ लक इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है मेरा लक कि मैकेनिक के पास पहुँचा हूँ एंड मैकेनिक इज़ नॉट हियर। और मुझे बाइक स्टार्ट रखनी है बिकॉज अगर बंद हो गई तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर नहीं पाऊँगा। आई थिंक दिस इज़ मेजरली द इशू ऑफ बैटरी, क्योंकि जो हॉर्न है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आई थिंक मेजरली डिस्टर्ब। और मैकेनिक से ही बात हुई है तो ही सेइंग कि ही इज़ इन लाइक शक्ति नगर से आगे, तो मीन्स लाइक ही इज़ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, जो कि सामान लेने के लिए गया हुआ है, विच मीन्स उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी आने में, राइट। और पानी में से करने वाला या हम फाइनली एट साइड और लेट्स गिव इट गोज ऑन। एक बैटरी 9 एम्पियर अवेंजर के लिए, 9 एम्पियर की बैटरी मिल जाएगी। एमेरॉन एक्साइड कौन सी? पुरानी बैटरी लेके 1,50,000 रुपये दिया साइड की। एक्साइड की 1,50,000 रुपये की पुरानी लेके। अच्छा, और एमेरॉन में? एमेरॉन में बता रहा हूँ। अच्छा, एक्साइड बैटरी 100 रुपये और महंगी है। एक्साइड की 100 रुपये महंगी है, एमेरॉन की सस्ती है। और क्या कुछ फैसिलिटी, कुछ वारंटी वगैरह? गारंटी दोनों की सेम है। कितनी? 2 साल गारंटी। 2 साल, ओके ओके। तो फिर आप ही कर दोगे? कार्ड पेमेंट हो जाएगा? ओके, तो मैं ले रहा हूँ एमेरॉन प्रो राइडर पूरी DPX 9R और हाँ 12 वोल्ट 9 एम्पियर पर आर। यस, दिस इज इट, दिस इज द बॉक्स। बाकी अंकल अब जाएंगे और मेरी बैटरी लगाएंगे, तब तक मैं लगे 1 सेकेंड ना कोई जरूरत पड़ेगी। This is the old battery. Say goodbye now. अंकल ये मैग्नेट की है ना ये भी?
please. Not used it. I'm just working too hard. अभी इसको लेकर फरीदाबाद जाना है, इसलिए आज ही करना जरूरी है। चलो जाओ। ओके, डन। Just the fucking battery. So let's just close this up. Closed. Yes, we have to get this thing out. This is what this. Awesome. Oh, too many cards. Okay. So my job is done. This is the battery. So I lost that much time because of nothing, but surely I face the problem. Thank you, uncle. Okay, uncle was very cute. बात हुई थी 1500 रुपये में, बच्ची दे रही 50 रुपीज़ का। गुड अंकल। Shit. This chain hurts me, man. Anyways, arrange it.